दिल्ली में प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 6 यूनिटों को यूनिट प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए गए। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं की कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण को हम नमन करते हैं। को स्क्वाड्रन के कॉलम में मंच से गुजरने की आज्ञा दें, श्रीमान। Chantoli in command of Flight Lieutenant Chirag Sharaw. परेड अब आपके सामने से रफाल फायर्स की जोशीली धुन पर मार्च करते हुए गुजरे। यह धुन ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित की गई है। परेड अब सामने से रफेल फ्लायर्स की जोशीली धुन पर मार्च करते हुए गुजर रही है। ये धुन हार्मोनी फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित की गई है। आज की ये परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते ये कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम और कंधों से कंधे मिलाकर हर संकट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारे वायु योद्धाओं का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए कह रहा है, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या।
marching through essential elements of any military parade, ensuring a disciplined team. Air Force Band, led today by Warrant Officer Deepak Varma. जी हाँ, आज की इस परेड को लय और धुन दे रहे हैं नंबर 3 और नंबर 6 वायुसेना बैंड के सदस्य, जो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद तथा एयरफोर्स स्टेशन पालम से आए हुए हैं। Band dressed in resplendent ceremonials have always enthralled the audience with their soul-stirring music. मिलिट्री बैंड का ये दस्ता विशेष रूप से जो धुनें बजा रहा है वो एस्ट्रोनॉट, स्पेस फ्लाइट, रेफेल फ्लायर्स, उनकी धुन है, साथ ही सारे जहां से अच्छा। अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान।
Chief of Air Staff will now address today's parade. Senior officers from the three services and the Ministry of Defence, esteemed veterans, air warriors on parade, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, on the 90th anniversary of the Indian Air Force, I extend my best wishes and welcome you all to this event. In a break from tradition, we have decided to conduct the Air Force Day Parade at Chandigarh this year and in different locations across the country from here onwards. I would like to compliment the AOC&C Western Air Command, AOC Advanced Headquarters, the AOCs of 12 Wing and 3 BRD, and the team for putting up such a befitting show in such a short time. My compliments also to the parade commander and all air warriors on parade for your immaculate turnout, precise drill movements, astute military bearing and josh. Good show and well done. We have inherited a proud legacy curated by the sheer hard work, perseverance and vision of our predecessors. It will only be right to acknowledge the contributions of our veterans who have charted this course, and now the onus is on us to usher the Air Force into the centenary decade. My salute to the former chiefs for steering the Air Force in the right direction, and my assurance to them that I, ably supported by all air warriors, will lead the Air Force to scale even greater heights. On behalf of all air warriors, I would like to pay homage to our fallen braves who made the supreme sacrifice in the line of duty. Today is an occasion to renew our allegiance to the Constitution of India, and as preservers of integrity and sovereignty of our country, we owe it to our future generations. On this historic occasion, it is my privilege to announce that the government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the Indian Air Force. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft, and weapon systems operators in twin and multi-crew aircraft. Creation of this branch would result in savings of over 3,400 crores due to the reduced expenditure on flying training. Induction of air warriors into the Indian Air Force through the Agnipath scheme is a challenge for all of us. But more importantly, it is an opportunity for us to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We have changed our operational training methodology to ensure that each Agniveer is equipped with the right skills and knowledge to start their career in the Air Force. In December this year, we would be inducting 3,000 Agniveer Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction of women Agniveers starting next year. Creation of infrastructure is in progress and streamlining of trade structures is being finalized. In the last 1 year, we have had our share of challenges, and the Air Force has taken these challenges head-on and with all guns blazing. Continued deployment along our borders, HADR operations, or rescuing stranded Indians from conflict zones. We have seen the entire spectrum of roles and tasks laid down for the Air Force being undertaken. We are well and truly prepared to take on everything that comes our way, and the credit for that goes to all of you. The traditional domains of land, sea, and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the convergence of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible, and adaptive technology. Technology has given us the wherewithal to be innovative. We need to accept the fact that tomorrow's conflicts cannot be fought with yesterday's mindset. To be able to execute all missions in an environment of denial will increasingly be the basis of our training in the Air Force.
Keeping this in mind, there is a need to plan for integrated and joint application of combat power. The key to success in multi-domain operations is to have flexible, robust, redundant command and control structures, which will allow a joint force to dominate across the domains. No single service can win a war on its own. Work is in progress to enhance jointness amongst the three services. The theme for this year's anniversary celebrations, Indian Air Force, Transforming for the Future, is very apt and highlights the Indian Air Force's need to redefine, reimagine, and recalibrate to transform into a contemporary and future-ready force. Our fighting potential has to be sustained over the years through the induction of new generation fighters, AWACS, AEWC, and flight refueling aircraft. We have initiated necessary steps to ensure our fighter squadron strength remains at the desired level. Indigenous development of 6 AEWC Mark II has been sanctioned, and we are actively pursuing the acquisition of I-STAR, UAVs, counter-UAS technology, and also strengthening our networks. Modern armed forces have to be sufficiently self-reliant to ensure minimum disruptions. Towards this, Atmanirbharta and Make in India is a step in the right direction. Our indigenous operational network, AFNET, the backbone of all air operations, the IACCS, one of the largest maintenance management protocols, the EMMS, and the fact that we are completely paperless in our offices through the e-office application is a testimony to our commitment towards becoming self-reliant. The light combat aircraft, advanced light helicopter, Akash, Astra, and BrahMos are a few examples of the indigenous hardware that has already been inducted and operationalized. We have also signed a contract for 83 LCA Mark 1A and are fully committed to the development of the LCA Mark II and the AMCA. The advent of drones, swarm drones, hypersonic weapons, and space-based ISR systems have added new dimensions to warfighting. To effectively handle the full spectrum, artificial intelligence is being used for quicker decision-making and analysis of big data. I am happy to report that several projects are well underway to utilize the potential of automation, data analytics, and artificial intelligence to transform our operational philosophy. The growth and success of any organization revolves around its personnel. Irrespective of the years of experience or position, each one of us is a vital link in the organization. We need to recognize our importance in the chain and understand that what we do every day at the workplace matters. A smart and efficient day's work will instill pride in our job. Our aim should be to match or surpass modern industry standards in operations, maintenance, and administration. As an organization, we need to incorporate the principles of continuous process improvement at our workplace. This can only be achieved through critical problem identification, understanding the root causes, and providing workable solutions to eliminate waste. We must focus on multi-skilling and multitasking to create a smart working environment and enhance efficiency. This is only possible if we build on our experience and develop innovative thinking. There is a tremendous scope for change, and change we must to evolve and be relevant. The challenge I pose to you all today is to transform into forward-thinking and forward-looking air warriors who can support our process of adapting to a constantly changing environment. I call upon every air warrior to be a part of the solution by your creativity, innovative thinking, and the drive to lead the change. I promise you good leadership, a good working environment, and the best equipment that we can muster. I want you to have faith and confidence in your abilities and a resolve to do the impossible. I want you to display exceptional courage and fortitude, to have compassion for your subordinates, and most importantly, be good professionals. As we celebrate 90 years of professional excellence, it is incumbent on us to preserve our past and accurately record the present so that the future generations of the Air Force benefit from it. The culture and traditions of the Air Force have led us to excel in our profession. But remember that while we have to preserve those elements of our culture that strengthen the Air Force,
we must be prepared to shed those that are barriers to efficiency and mission accomplishment. I congratulate all of you for the successes of the Indian Air Force, which would not have been possible without your collective, sincere and dedicated efforts as a team. As we start a new chapter in the history of the Indian Air Force, our aim should be to sustain our capabilities as a fearless and potent force and maintain a cohesive, happy family. I have no doubt that your commitment and your collective capacity to achieve excellence will take the Indian Air Force to even greater heights in the years ahead. On behalf of my wife Neeta, I would like to congratulate everyone on the 90th anniversary of the Indian Air Force, and may the Indian Air Force always touch the sky with glory. Thank you and Jai Hind. All are requested to rise for the national anthem. अब राष्ट्रगान होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं राष्ट्रगान गाएं। राष्ट्रगान शुरू कर। The parade commander has now taken permission to march off the Nishan Toli and the parade from the parade ground. Colours of Mark of Honor were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on 1st of April 1954, in recognition of his service to the nation. Colours, therefore, are highly reserved and are displayed with due fanfare and honor only on special occasions. The presentation of the colours to the Indian Air Force on 1st of April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Sardar Dyal Singh Majithia took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. It is customary to rise whenever the colour passes in front of the audience and all uniform personnel saluted. निशान टोली सामने से आते हुए सभी इनके सम्मान में खड़े हो गए हैं और जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, वर्दीधारी गण जो हैं वो सलामी दे रहे हैं।
Shantoli marching off the parade ground onto the tune of Space Flight. वायुसेना से जुड़े और सेना के अन्य अंगों से संबद्ध कई वरिष्ठ अधिकारी इस समारोह में उपस्थित होकर शान बढ़ा रहे हैं। इनमें कई पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आदि शामिल हैं। Chief of Air Staff now meeting former chiefs in the spectators gallery. Chief Marshal A.Y. Tipnis, Air Chief Marshal R.K. Bhadoria. Yes. Air Chief Marshal S.P. Tyagi, Mrs. Tyagi, Mrs. Neeta Chaudhary, President AFA. भव्य परेड के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अब हम आपके समक्ष भारतीय वायुसेना के नव प्रशिक्षित वायु योद्धा को तकनीकी दक्षता प्रदर्शित करते हुए एक जिप्सी ड्रिल दिखाएंगे, जिसमें एक चलते फिरते वाहन को अल्प समय के अंदर खोलकर पुनः चलने। In the next few minutes, what you are going to witness is a different drill. The team in front of you onto your television screen that you can see will simulate the actions of a special force in difficult terrain. The team leader, AC Navdeep Singh, will now take permission from the Chief of the Air Staff before they start today's gypsy drill. भारतीय वायुसेना के नव प्रशिक्षित वायु योद्धाओं की तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करते हुए एक जिप्सी ड्रिल यहाँ दिखाई जाएगी, जिसमें एक चलते फिरते वाहन को 5 मिनट के अंदर खोलकर पुनः चलने योग्य बना दिया जाएगा। ये ड्रिल न केवल युद्ध के मैदान में
आगे बढ़ते हुए बख्तरबंद गाड़ियों में आई खराबी को ठीक करने में दक्षता का प्रदर्शन करती है, वहीं दूसरी ओर नए वायु योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। परिवहन की यांत्रिक संक्रिया AC Navdeep आरंभ करने Singh की now आज्ञा taking दीजिए। permission from the Chief of the Air Staff to Change commence board. the drill. There is no mountain high enough. Ahead of him. When faced with an obstruction, instead of stopping in their tracks, the team takes a split-second decision. Their actions will speak volumes of their resolve towards successful completion of the task entrusted to them. Their nerves of steel in a high-pressure situation and the quality training they undergo. The Maruti Gypsy, dismantled up to the chassis level and assembled back to running condition in a cohesive and sequential manner. This vehicle weighs about 1.2 tons. The half-ton engine block, which is otherwise lifted using a pulley and chain system in a workshop, is lifted manually by our foot soldiers, carried over rough terrain and put in place without affecting the serviceability. तकनीकी कुशलता, एकाग्रता, गति एवं समन्वय का संयोजन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। There is no mountain high enough, no canyon deep enough, nor a river wide enough to keep an air warrior from accomplishing the task ahead of him. If the boulder cannot be moved, the vehicle will. Watch closely as the team unmoves by the hindrance blocking their paths, proceeds to take part their transport, carry it literally piece by piece, assemble it and continue towards their objective. The drill displays the quick and crisp movements of the trainees and their ability to perform accurately within the constraints of time. The speciality of this drill is that the entire activity is performed by a group of young air warriors who have just passed out from the training institution. The participants of the drill are LAC Rohit Kumar, LAC Ankush Singh, AC Vishal Singh, AC Navdeep Singh, AC Sahil Nehra, AC Anmol Tyagi, AC Pankaj Barwar, AC Ranjan Sharma, AC Yogesh, AC Ace Rathore, AC SK Sharma and AC Bunty Singh.
पूरी कुशलता और तल्लीनता के साथ काम कर इन योद्धाओं ने 1.2 टन वजनी वाहन को पुनः जोड़ दिया है। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करते हुए दर्शक और अतिथिगण। Team successfully completed assembling of the vehicle. ये ड्रिल न केवल सराहनीय है बल्कि युद्ध के दौरान भी अत्यंत उपयोगी साबित होती है। The former chiefs in the spectators gallery. वायुसेना से जुड़े अधिकारियों और दर्शकों का समूह, इन्होंने ये प्रस्तुति देखी जिसमें एयर वॉरियर्स ने जिप्सी ड्रिल करके दिखाया। And now you will witness the display of precision rifle drill by the air warrior drill team of the Indian Air Force, named as Arjun. Arjun, the Air Warrior Drill Team, was formed in the year 2004, and during 18 years of its glorious existence, it has won accolades in various national and international performances, making it the first drill team of the Indian Defence Forces. The name Arjun is a tribute to the late Marshal of the Indian Air Force, Arjun Singh, Padma Vibhushan, Distinguished Flying Cross, who lived his whole life as a true soldier and is an inspiration to generations of service personnel. Under the able guidance of its officer in charge, Wing Commander Kunal Khanna, Team Administrator, Squadron Leader Akash Gangat, and competent instructors JWRB Upadhyay and Sergeant Rajdeep Singh, the team aspires to achieve the incredible. Today, the drill team will perform unconventional and breathtaking rifle maneuvers. The motto of the team is simple: drill to thrill. अब टीम लीडर हमारे मुख्य अतिथि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से प्रदर्शन को शुरू करने की आज्ञा लेने जा रहे हैं। टेरिटरी को इशू करने की आज्ञा है श्रीमान। और अब टीम आपको रोमांचित करने के लिए तैयार है। टीम आज रोमांचक राइफल करतबों को 9 विभिन्न तरीकों में दिखाएगी। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है स्क्वायर फॉर्मेशन। अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी दक्षता को आपके नजदीक आकर प्रदर्शित करेगी। टीम अब डब्ल्यू फॉर्मेशन में रोमांचक करतबों को प्रदर्शित करेगी। असीम अभ्यास एवं परिश्रम करने के पश्चात यह टीम जटिल गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित कर रही है।
टीम अब डब्ल्यू फॉर्मेशन से कूच करेगी। और अब देखिए अब तक का एक नया कारनामा, जिसमें वह योद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने साथ चल रहे साथी की ओर फेंक रहे हैं। इस बीच एलएसी तरुण देसवाल आगे बढ़कर उच्च स्तरीय एकल प्रदर्शन करेंगे, जो कि फुर्ती, लचीलापन और अदम्य साहस का संयोजन है। अगली फॉर्मेशन है रोम्बस फॉर्मेशन। यहां हमें इन वायु योद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलो है वह इनके हाथ में खिलौनों के समान प्रतीत होता है। अब समय है कि आपको एक और हैरत अंगेज करतब पेश किया जाए, जिसमें वह योद्धा बिना देखे हुए पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनके मध्य 12 फीट की दूरी भी है। अगली फॉर्मेशन है इनक्लाइन लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायु योद्धा एक ही कतार में चलते हुए राइफल की अदला बदली करेंगे। यह प्रदर्शन अनुशासन और प्रशिक्षण के साथ साथ तीव्रता का प्रतीक है। ड्रिल वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुशासन वायुसेना की जीवन शैली है। अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से न हटाएं। अब आप देखेंगे कितने अनोखे अंदाज से ये एक दूसरे को राइफल पास करेंगे। टीम अब 4 लाइन फॉर्मेशन का निर्माण करेगी। यहाँ यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि ड्रिल न केवल व्यक्ति में धीरज के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि उनमें मुकाबला करने की क्षमता एवं प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। एक बार फिर से टीम आपको हैरत अंगेज करतबों से अचंभित करते हुए बिन देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को एक बार फिर से राइफल फेंकेगी।
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब टीम जिग-जैग फॉर्मेशन में कूच करते हुए संयोजित राइफल करतब करेगी। और एक बार फिर से हमारे बीच आ गए हैं एलएसी तरुण, जो कि अपनी उत्कृष्ट श्रेणी की राइफल ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे। अब टीम अर्धवृत्ताकार फॉर्मेशन में प्रदर्शन करेगी ताकि आप निकट से इस प्रदर्शन का अनुभव ले सकें। यह टीम सारी गतिविधियों को जीरो एरर टॉलरेंस के अंतर्गत प्रदर्शन कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। जब तक आप ड्रिल को देख रहे हैं, मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूं। आज के टीम लीडर हैं एलएसी विक्रम। पहली पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी धनाराम, संतोष, अमन, अंकित, रंजय, पंकज, एनके झा, साहिल और कौपल चिन्नतंबी। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं आदर्श, अमन, विशाल, सुमंत, नितेश, प्रियांक, साहिल गोसाई, मुकुंद और एलएसी एचपी सिंह। टीम की अगली फॉर्मेशन है क्राउन फॉर्मेशन। ड्रिल के संगीत को संयोजित किया है विंग कमांडर जयचंद्रन, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड ने। देवियों और सज्जनों, टीम अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बना रही है, जो कि है टनल फॉर्मेशन। टीम लीडर अपने साथियों की ड्रिल क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेंगे, जो कि आज का सबसे रोमांचक करतब है। और जिन्होंने एक बार पिछला मौका छोड़ दिया, उनके लिए अब एक बार और मौका। यह कठिन परिश्रम, बेहतरीन मानसिक शारीरिक तालमेल और अपनी एवं अपने साथियों की योग्यता पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस ड्रिल टीम ने .303 राइफल का प्रयोग किया। इस पूरी ड्रिल टीम को प्रशिक्षित करने में कुल 6 महीनों का समय लगता है। टोली को ना जाने की आज्ञा दे मत। Please put your hands together once again for a breathtaking performance by these young air warriors. अब आपके सामने भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा अपनी नई युद्धक वर्दी को पहली बार देश के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
Now, Wing Commander Kunal Khanna and the team are presenting the new combat uniform of the Indian Air Force. Right, come to salute, salute. अब आप देख सकते हैं हमारे वायु योद्धा जो आपके समक्ष कदम ताल करते हुए आ रहे हैं. The air warriors are adorning the combat T-shirt which signifies the working dress of the Indian Air Force. भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट टी शर्ट को पहली बार शामिल किया गया है. यह नई वर्दी एयरफोर्स स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी के कई प्रयास और अनुसंधान का परिणाम है. वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एवं बदलते युद्धक वातावरण और तौर तरीकों में इस युद्धक वर्दी का विशेष रूप से प्रयोग एक आवश्यक कदम है. इस वर्दी को धारण करके युद्ध के मैदान में न केवल दुश्मन को चकमा देते हुए लगातार आगे बढ़ा जा सकता है, बल्कि रेगिस्तानी तथा पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों में भी यह वर्दी एक पारंपरिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है. बदलती सैन्य कार्यवाहियों में किसी भी अभियान को 100% सफल बनाने में यह एक अति आवश्यक अंग है. इस वर्दी की विशेषता है इसकी कॉम्बैट टी शर्ट, फील्ड स्केल डिसरप्टिव कैप, कॉम्बैट बोनी हैट, डिसरप्टिव वेब बेल्ट, एंकलेट कॉम्बैट बूट्स और मैचिंग टर्बन. Right, बढ़ चलेगा, बढ़े, बढ़. Right, पीछे, बढ़. Right, आगे बढ़ेगा, बढ़े, बढ़. The new uniform is unique. It has an exclusive, contemporary and functional design made in order to make the soldier better camouflaged in nature. The fabric is lighter and sturdier, making it comfortable to be worn for longer durations. This new uniform's versatility also means that it can be worn in different terrains, from the mountainous terrain of Kashmir to the vast coastline of the peninsula, and from the thick jungles of the northeast to the deserts of Rajasthan. The air warriors standing smartly in front of you are in full disruptive gear, showcasing the new combat uniform. Flight, Marco, बढ़. Flight, test, चल. नई युद्धक वर्दी एयरफोर्स स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी के कई प्रयास और अनुसंधान का परिणाम है. वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बदलते युद्धक वातावरण और तौर तरीकों में इस युद्धक वर्दी का विशेष रूप से प्रयोग एक आवश्यक कदम है. इस वर्दी को धारण करके युद्ध के मैदान में न केवल दुश्मन को चकमा देते हुए लगातार आगे बढ़ा जा सकता है, बल्कि रेगिस्तानी तथा पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों में भी ये वर्दी एक पारंपरिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है. भारतीय वायुसेना का उद्देश्य वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम से लिया गया है, जो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में आता है. नभः स्पर्शम दीप्तम